Sorry all of you, due to some problem we have just stopped for 2 moments. Again, good morning to Principal Ma'am and all of my comrades. Today on 18th February, this is the golden opportunity for me to be deliver the content as the part of our in-house training at GD Mandal International School, Muzaffarpur. Today, as our STLC head, we have allotted the topic selection of effective teaching learning material. In this context, we have to discuss, we have to take something from my side and your sides also. So regarding this, we have prepared as much as possible the content materials related to this topic. So this topic is not new for all of us. This is a very common topic and we all are experienced teachers as we are familiar with this topic. All of us memories of our school or college life. During that age, we have studied by many teachers, many scholars. Just remember on those days, some of them were very good in nature, very good in their interpersonal skills, very good in their subjects to understand, to taught all of us. But all the teachers on that time we have studied, we have taught by them, not in our memories currently, but some of them are also in our mind, in our heart, in our soul. Dear comrades, just think about that. Why some teachers, some facilitators, some resource persons, some guiding principles are in our mind. Yes, of course, they are in our heart, they are in our mind, and still they will live till our life in our mind, in our life. Why? Because they were sympathetic, they were knowledgeable, they were caring for us. Why some of them were caring? Why some of them were memorized forever? It is a matter of very sensitive. It is a matter of very serious to think about our salvage. Because right now we are also a teacher. What we have obtained from our teachers, we just try to imply to our students. So those teachers who are in our mind, they have some effective natures, they have used some techniques, they have used some TLM regarding our teaching. They facilitate their knowledge in a proper way, in a systematic way to deliver the content, to teach us. Why they are in memory. So the topic is selection of effective teaching learning material. As the topic suggests, that is selection of effective. The topic itself tells that there are numbers of teaching learning materials, and short we can say it TLM. In the present world, as the technology has developed, there is no lack of teaching learning material around us, not only in education field, in corporate sectors, in our real life, in agriculture. In other words, we can say each and every aspects of our life. So how to select and what will be the impact of selection of effective TLM? Today we have to discuss in this context. We all are teachers. We all go into the classroom, teach to our students. So on what aspects we have to focus?
one thing is more important here, that we are discussing with selection of effective teaching learning material. There is no need to go anywhere, no need to go, no need to select, no need to choose any TLM outside from us. We itself as a vital TLM. We itself prove, we itself use, we itself do as a TL. So we can do anything, each and everything depends upon us. Each and everything depends upon us. Just think a scenario about a teacher as a TLM. I am talking about a storytelling. Suppose in English reading or Hindi reading, there is a chapter in which a story has been given to any personalities. That personalities may be any sectors, any fields, etc. The students is able to study, able to read the topic, read the story very well. They are able to understand himself. Their parents are capable to teach them the story. Just try to read the story and give them the meaning of the story, what the story tells, summary of the story, and like what about all that. Their brothers, sisters also able to tell them about the story, the meanings, the concepts, the motto of that story. Then what we are also going to teach, we are also going to teach the story. Then what is the difference between taught by their parents, taught by their brothers and sisters or any other family members, and us, we the teachers? Why? As they have already understood, they have already understood the theme, the motto of that story, then why the need of a teacher here? We the teacher, we have the experience of teaching methodology. So we can taught them in an effective manner. That's the TLM which resides on our side. But how can we do that? How can we do that? How can we make the difference taught by their family members and me? For that, the teacher needs to be fluent in their pronunciation, fluent in their meanings. So here the pronunciations, reading pronunciation is the main tool, to taught the students. In that case, we should be rich in our pronunciation, in our understanding. That make the difference between their family members and teachers. So this is the interesting thing about that. This works as a TLM. So we can increase, we can create the TLM about myself, about our own. Suppose the study about science subject. Suppose you have to taught your student about a plant. You just try to taught them about the plant. That plant have a structure, it have a stems, it have roots, leaves, fruits, whatever. But whenever a biology teacher just try to taught them in a realistic manner, if it is possible, they can draw the structure of a plant. They can just collect, they can just arrange a small plant and show them these are their parts, these are the leaves, these are the stems, fruits, whatever, all the each and every components of the plants, they are able to taught them in that manner. That will be more beneficial for the students. That will be more beneficial. Dear comrades, dear teachers, that is the teaching learning process is an ongoing process. This process is not for few minutes, few hours or few days. This will running till our life. We must understand, we must learn from someone. We taught them and we should also learn
from them. So this is an ongoing process. A plant can't give a fruit in a one day. That's why we can't shape up them in one day. For this we have betterment preparation of our class before entering to our class. It's the very beginning of our class. Whenever we enter into the class, we should must prepare with most effective TLM. Today's topic deals with the effectiveness of TLM, how to choose the right TLM, how to choose the right TLM, their preparedness, their use. Also, it depends upon me. So we should must aware about the TLM. Sir, please, first slide. Now we should just move to our PowerPoint presentations, because we have prepared a short PowerPoint presentations. By using that, we want to start today's presentation and just try to do my best as much as possible. So let us proceed. The context. As we are dealing with the TLM, we have to discuss about its component. This is the language. We are discussing language. Respected teachers, please wait for 2 minutes only due to some words. We have to stop for some time. Okay. So we are talking about language. Language, हम सभी लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं, like हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत. This is not only for language teachers and this is not only for the language subjects. This implies on each and every subject. So just think about that कि किसी भी भाषा की ग्रामर जितनी अच्छी होगी, उस भाषा में उनकी पकड़ उतनी ही अच्छी होगी. This is not the subject like Hindi, English, Sanskrit, Urdu, Bangla or any other languages. In case of computer science, Arpana ma'am, please off your video. Arpana Kejriwal ma'am, please off your video. So, in case of computer science also, because it's also a language, as I am teacher of computer science, so computers is also computer science. Computer have also its own programming language. So they have the rich knowledge of its grammar. Grammar जिसकी जितनी अच्छी होगी, उस language पे उतनी पकड़ उतनी ही अच्छी होगी. So language को यहाँ correlate करने का हमारा मतलब ये है कि language is a medium through which one can express one's idea, thoughts, feelings and messages. Language teaching is somehow a difficult task as it is basically conditioned by the nature of the subjects, as I have stated earlier, that for different subjects their grammar are different. We can't imply the grammatical rule of Sanskrit into English or Sanskrit. In case of programming language also, there are so many programming languages, their syntax are different. We can't use the syntax of C++ in case of Java. We can't use the syntax of COBOL in case of Python. So these are the different. So language basically is a medium, is a tool. We can use it as a medium to interconnect to anyone. So for making the teaching interested, a teacher can take help of teaching learning material. Teaching learning material is not used in the modern era. Teaching learning materials are used since ancient times. But as the time spent, as the technology developed, we have the level of teaching learning materials, number of teaching learning materials, their use has increased so far. So while selecting the teaching learning material, a teacher should ensure that skills of reading, listening, speaking, understanding can be developed. So अगर किसी कार्य को हम करते हैं तो उस कार्य के करने के पहले हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, तो बिना उद्देश्य का, बिना गोल का अगर जीवन जिस तरह बेकार होता है, इसी तरह जिस तरह हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन में हम अगर टीएलएम के यूज कर रहे हैं, आज हम टीएलएम की बात करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करते हैं, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में
हम जिस मटेरियल का, जिस टीएलएम का यूज कर रहे हैं उसको यूज करने का क्या मोटिव है, क्या इफेक्ट होगा हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर, उन बातों को हमें ध्यान में रखना है. सो फ्रॉम दिस स्लाइड्स, दिस पेज, we say that language is the works as an effective TLM, because at the very beginning of the moment we just enter the class, our language affects on our students. भाषा की जटिलता उतनी ही मधुर हो सकती है और उतनी ही कटु हो सकती है. ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि किस तरह की भाषा का हम यूज कर रहे हैं क्लासरूम में इंटर करते वक्त, हमारी भाषाओं का. सो आवर लैंग्वेज, आवर इंटरपर्सनल स्किल्स, we just enter into class, we say something to the students. This is also a part of TLM. Now objectives, what will be the objective of this session? So in this session we will discuss about the variety of teaching learning materials used in the classroom. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस presentations के through only few slides, using few slides we just discuss all the teaching learning materials at a single 1 hour presentations. It's unlimited, it's unlimited, it's impossible to discuss each and every tools, but the common tools which we can use easily we just try to sum up into this presentation. So after this session we will be able to know what are the importance of teaching learning materials which will enhance the performance, enhance the concept of students. Classify the teaching learning material on their characteristics. हमारे पास TLM बहुत प्रकार के होते हैं, but as per standard, as per scenario, as per age group, here age group relates to their class because their thinking skills are different to their age. A class 2 students can think the same thing not as class 10 students. So their thinking characteristics, thinking ability are different. 1 minute just. क्या ठीक जा रहा है? We will also try to distinguish different teaching learning materials in this context. एक पॉइंट यहाँ पे आया है कि क्लासिफाई द टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. हमने जैसा कहा कि क्लास 2 के बच्चे को समझने की शक्ति उतनी नहीं होती जितनी कि क्लास 10 के बच्चे की होती है. नाउन की बात हम करते हैं तो नाउन क्लास 2 के बच्चे को भी पढ़ना होता है और नाउन क्लास 10 के बच्चे को भी पढ़ना पड़ता है. कंप्यूटर की डिफिनेशन क्लास 1 के बच्चों को भी बताई जाती है और क्लास 11 में भी जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज व्हाट इज कंप्यूटर. हमने उसी चीज को क्लास 1 में पढ़ाया, बट आफ्टर 10 years or 11 years what is the need to teach the students of class 11 as per your standards, as we have to elaborate the content as per them. So in this training, in these presentations, these are the objective for that. Let's move to next slide. Now today, that is the overview of selection of teaching learning material. That is, what are the overviews of TLM? The aids used by the teacher or facilitators in the classroom to make his teaching more understandable. जो भी एड्स, जो भी टूल्स को हम यूज करते हैं TLM के रूप में क्लासरूम के में, दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल. हम वैसे TLM का यूज करें जो बच्चों के समझ में, उसके थ्रू जो भी हम बताने जा रहे हैं वो नहीं समझ में आए, तो वैसा किस काम का. हम कितना जानते हैं किसी भी विषय के बारे में, कितने विद्वान हैं, हमारी डिग्री क्या है, ये मायने हमारे लिए नहीं रखता. हमारे लिए मायने रखता है कि हम क्या दे पा रहे हैं, बच्चे क्या सीख पा रहे हैं. ये एक फैसिलिटेटर का रोल होना चाहिए हमारे क्लासरूम के अंदर. सो वी शुड थिंक अबाउट दैट, the aids used by us, how much benefited to the students,
how much effective to our students. This is the known as teaching learning material. So we must be caring, must be aware during selection of teaching learning materials. Teaching learning materials are of many types, can be broadly categorized into many types. It can be big, small, low cost, high cost or no cost. So both teacher or students can make it easily. For examples, blackboard, map, chart, tape recorders, DVDs, CDs, these can be used as a TLM. हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि हम जिन TLMs को यूज कर रहे हैं उन TLMs को उतने बड़े स्तर पे नहीं दिखा पाए, बट उसका एक सैंपल जो है वो हम दिखा पाए बच्चों को। आज ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं, मैप की बात करते हैं, ग्लोब की बात करते हैं। ग्लोब में पूरे वर्ल्ड को दिखाया जा रहा है। अब पूरे वर्ल्ड को हम एक ग्लोब के माध्यम से उतना बड़ा हम स्फीयर या कुछ ऐसा बना नहीं सकते। ब्लैक बोर्ड पे अगर किसी स्ट्रक्चर्स, किसी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स या किसी ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाना है तो वहां पे हम बना नहीं सकते। उसकी आकृति छोटी हो सकती है, उसका स्ट्रक्चर छोटा हो सकता है, बट वी आर एबल टू explain, we are able to explore each and every component of that particular entity, of that particular object. Teachers should use teaching learning materials in an appropriate way. We teachers, our community is civilized community. We are the building blocks of our society. We are the building blocks of our country. We are the pillars. We are the backbones of Indian education system. So we can strengthen the education system of our country. Without a teacher, a country can't develop. So we are shaping just the future of our country. So our role is vital. Each and everything depends upon us. As we input, we will receive the output. बच्चों को जैसा सिखाएंगे, जिस तरह का TLM यूज करेंगे, जिस सेंस में सिखाने की कोशिश करेंगे, वो वैसा डिलीवर करेंगे, वो वैसा एक्सेप्ट करेंगे, वो वैसा आउटपुट देंगे. So the TLM not only helps the students to enhance their learning, but also make their learning permanent. हम आज क्लास में गए, हम इस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम इस तरह से TLM का यूज कर रहे हैं. आज उसकी समझ में आ गई, आज उसने एग्जाम दिया, 100% मार्क्स आ गया, बट कल उसको कुछ भी याद नहीं है. So this is temporary learning, this is temporary teaching. This should be avoided. So we should always try to keep our learning permanent, that can be used by the students for their future purposes, for make their career, for make their future building. So before selecting the teaching aids, teachers should first think about their practical aid and assess whether the aim of using aids, that is the purpose of teaching, can be achieved or not. शिक्षा अगर हम किसी को दे रहे हैं तो शिक्षा के बिना उसके अंदर इंसानियत आ रही है क्या? ह्यूमन बीइंग्स, एक विद्वान बनने से पहले उसे एक अच्छे इंसान बनने की जरूरत पड़ती है. सो वी ऑल्सो गिव देम नॉट द टीचिंग like textbooks or any other TLM set what we have to use during the classroom session, but also motivate them, also give the moral education. That's why they are real applicant, real candidate for deserving all these things, for accepting all these things. So our aids, our TLMs should always, we should try always, our teaching aids should be student oriented, should be selected systematically, should be selected in a proper way to fulfill their purpose. Now we should discuss the meaning and purpose of TLMs. अभी आप लोगों के सामने एक स्लाइड है जिसको दो पार्ट में बांटा गया है और दोनों में दो पिक्चर्स दिख रहे हैं. सो दोनों में दो पिक्चर्स दिख रहे हैं. स्टूडेंट्स को ये करने के लिए कहा जा रहा है, स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दिया जाए टीचर के द्वारा कि ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ रैबिट. रेस्पेक्टेड टीचर्स, just see in both the sections the teacher instruct the students to draw the image of rabbit, draw the picture of rabbit, but there are slightly difference between both of them. What is the difference between both of them?
In section 1, they have to instruct only draw a structure of rabbit, picture of rabbit. But in second picture, a teacher has already drawn a structure of rabbit. They have to draw using that structure by viewing that structure. So, what will happen in both the cases? Just see, learner will be more enthusiastic, will be willing to learn in second figure. Why in case of second figure? Because the second figure, the picture of rabbit has already drawn. That will help the child to learn how rabbit looks like and they will draw the picture. क्योंकि उनको उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी आकृति के बारे में उनको दिख रहा है वहां पे, और उसको देखेंगे और वो आसानी से बनाएंगे. बट फर्स्ट पिक्चर में हमने कहा हो सकता है कि कुछ बच्चों ने, अभी मैंने रैबिट का एग्जांपल लिया, इसमें थोड़ा सा भी आश्चर्य करने की बात नहीं कि रैबिट तो सबने देखा होगा. ये रैबिट तो एक एग्जांपल है, हो सकता है रैबिट की जगह पे हम कोई कुछ भी बनाने के लिए उसको देंगे जिसको उसने नहीं देखा है. तो उस केस में उसके मन में सोचना होगा थोड़ा सा कि क्या पिक्चर होगी, क्या होगा. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट जस्ट सी दैट द पिक्चर ऑफ रैबिट इज अ टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल व्हिच about we will going to discuss. So here rabbit, image of rabbit helps the student to draw the structure of rabbit in comparison to the first section. Therefore we can see that the TLMs, that is teaching learning materials, are therefore are tools which are used by the teachers to help the learners to learn the concept with ease and efficiency. So we should always try to give them conceptual learning. हम क्लास में गए, हमने उनको बता दिया कि इस तरह की होती है बातें. हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, हम एक मैथ टीचर के रूप में क्लास में अगर हम जाते हैं, सर्किल को पढ़ाना हमने सीधा बता दिया कि सर्किल क्या है, सर्किल को पढ़ाना, एरिया पढ़ाना, पेरीमीटर पढ़ाना है, ये इसका फॉर्मूला होता है. Perimeter is equal to 2 pi r and area is equal to pi r square. Just start your exercise and try to solve your question. This is not right way. We should first taught them what is circle, what is its structure, how the perimeter can be calculated, why the formula of area is pi r square as per their standard. As we go in the low standard like 6, 7, 8, we should only give them the structure, give them the idea of perimeter about any figure, not in case of circle, in case of any plane figures. But as and when we go to 9, 10, 11, 12 and whatever in higher standard, we should must give them the proper concept, proper theoretical knowledge before going to solve the exercise. So teaching learning materials plays a vital role in the classroom. Therefore teaching learning materials helps the students in bringing novelty and freshness in the classroom teaching, as it relieves learners from anxiety, fear and boredom. Now teaching learning materials can be selected, can be chosen depending upon the needs and the types of learners. हमारे क्लास में 50 स्टूडेंट्स होते हैं. सारे स्टूडेंट्स की लर्निंग कैपेसिटी, थिंकिंग स्किल, रीडिंग स्किल ये सारी सेम नहीं होती. सबों की लर्निंग कैपेसिटी अलग अलग होती है. कोई बच्चा किसी चीज को जल्दी समझ लेता है, कोई बच्चा किसी चीज को बोर्ड पे लिखने मात्र समझ लेता है, कोई बच्चा जब तक हम एक्सप्लेन नहीं किए वो समझ नहीं पाता और किसी को उसके लिए घर पे जाके होमवर्क करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, उसको रटना पड़ता है. तो their learning skills are different. So different style of learning. Through this slide we are going to discuss today. Physical के केस में क्या होता है? This is also called kinesthetic. So the child prefers using the body, hands and senses to touch to learn. Sense of touch to learn. In case of physical, the child prefers using the body, hands
and sense of touch to learn. Logically, as we all learn, as we all know, logical and mathematical. So logical means here logical operations, logical expressions, logical comparisons like not equal to, greater than, less than. These are the logical expressions, logical operators. So in mathematics we use logical operators, in computer science also. So the child prefers using reason, logical, or recognizing the pattern easily. Sometimes we have to taught in mathematics questions like patterns. We have to set the logical values. So sir, the child prefers to learn within a group and it's usually a good communicator. ग्रुप्स की बात करते हैं. अगर बच्चों ग्रुप्स की, अगर सोशल वेलफेयर की, सोशल इन्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती तो हमारे बच्चे घर पर ही रह के पढ़ लेते, उन्हें स्कूल आने की जरूरत नहीं पड़ती. स्कूल, कॉलेजेस, दीज आर द प्लेसेज where students are provided in a social environment. They meet the different students, different their friends. They comes from different environments, and school provides a common interpersonal environment which gives them a better future. So child prefers to social. कई बार होता है कि बच्चों को हम पढ़ा रहे थे, उन्हें कि चलो क्लासरूम में पढ़ेंगे, अकेला बच्चा होता है, एक दो बच्चा होता है, सर आज बहुत बच्चा नहीं आया है, आज पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही. तो जब उनका सोशलिज्म होता है, वो एक साथ जब गैदर होते हैं तो एक दूसरे में कॉम्पिटिटिव की भावना होती है, एक दूसरे में कॉम्पिटिटिव भावना होती है और उसके फलस्वरूप वो पढ़ना कोशिश करते हैं. सो ऑन दैट केस देयर विल बी गुड कम्युनिकेटर अबाउट देमसेल्व्स. Solitary, the child prefers to learn work alone and shows independent play. कई बार ऐसी भी होती है कि अगर भीड़ भाड़ में एक साथ उनको रख दिए तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वो किसी साइड में कोने में अकेले में रह के पढ़ना पसंद करते हैं. तो these are the different natures, different learners, different types of learners. Visual में क्या होता है? Child prefers using pictures, images, and they learns by watching, observing the visual things. Oral, the child prefers using sound and music by listening the music and they just start reading. कुछ बच्चों की आदत होती है, आज की जो संभावनाएं है, आज की जो समस्या है, आज का जो इन्वायरमेंट है, बच्चे कान में माइक्रोफोन लगा लेंगे, हेडफोन लगा लेंगे और बात करना वो शुरू करेंगे, गाना बज रहा है, गाने के बिना मेरा मन नहीं लगता. तो बट इस तरह की इन्वायरमेंट हम स्कूल में नहीं प्रोवाइड करते, बट वी कैन गिव देम द टूल्स. वी कैन यूज दीज इंस्ट्रूमेंट्स एज अ टूल इन आवर classroom teaching, so that the different learners, different types of learners can understand by using these tools. Now there is a structure like cone on the slide which we are able to see on the screen. This is called Dell's cone. Dell's Edgar was an American educationist during 1960s. So they have developed the cone of experience. By using that, they have written the different methods, different TLMs, different teaching learning materials, the steps of teaching learning materials. Using that, we can make our classroom effective and permanent. So these are the different contexts, these are the different points. This is the Dell's Edgar's model, Cone's models, their experience they have shared through this. So this is basically called the instructional designs. Using that, we can taught the students. Here in the slide we are able to view the structure like the cone.
it is written degree of abstraction. There are two things, that is that is concrete and abstract. As you see, that is from top, that is the vertex of the cone. It is text or verbal symbols, pictures, visuals. There are so many points, but all those points had categorized, had divided into two subcomponents. That is, one from some of them are abstract and some of them concrete. ये जिस तरह से हमारे पास टॉप में जितनी भी चीजें लिखी गई है, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इसको ला रहे हैं, और जिस तरह से ये बॉटम डाउन में आ रही है, ये हमारे लो ये आ रही है कंक्रीट क्लास के अंदर. तो जस्ट सी हियर दैट the written all those points from top of the cone, that is text, verbal symbols, pictures. These are the tools using which we can taught the students that these are the less effective to our students. As and when we can go the bottom down, these are the direct impact on our students. So that is verbal or textual symbols like reading or listening way of teaching is least effective, as it is called indirect method of teaching. But the most effective method of the teaching, which has written on the bottom, that is involving direct, purposeful or concrete learning experiences such as hands or fields on experience. As we know that the action-based learning results up to 90% retention. So we must focus on action-based learning. Teachers should strive for making classroom teaching nearest to direct experiences. Teachers must strive to focus on nearest to direct experiences, direct learning. They have to focus on purposeful experiences. As field or hands-on experiences are not possible in all cases. So our teachers are trying to making the classroom instructions most direct, appropriate, using the right TL, so that the student can most deserve, most grasp, most achieve. So the kind of TLM affect the learning. So we must think before using the TLM. We must think before learning the TLM and always try to focus on direct learning. Now we are going to explain the Dale's cones of experience showing the degree of abstraction. The organizing principle of cone is progression from most concrete कहते हैं यहाँ पे हम direct experience को, at the bottom of the cone to the most abstract, indirect at the top. According to Dale, the least effective method is the top, that is more use of verbal, textual symbols like reading, listening to spoken symbols, that is less impact to our students. As action learning results up to 90% retention, teachers should always focus. Teachers should always strive for making their classroom effective, efficient to teaching through direct experience. Now this is active or passive learning. एक्टिव और पैसिव लर्निंग की बात यहाँ पे आ रही है. कॉन्सेप्ट हमारे पास वही है जो कॉन्सेप्ट हमारे पास एक्टिव लर्निंग, हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, वहां पे एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात आती है. दोनों बातें सेम होती है, बट कहने का जो तरीका है, जो वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ राइटिंग है, वो हमारा डिफरेंट होता है. हम इस कॉन्टेक्स्ट को, इस कॉन्सेप्ट को वहां से लेते हैं. एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग की बात आती है because there are two pillars, two things, two components. So first we should understand एक्टिव और पैसिव. यहाँ पे एक्टिव कौन है, पैसिव कौन है?
Active means learner centered, and who are learners? Students are learners. Passive means teacher centered. So एक्टिव और पैसिव लर्निंग को हमें इस तरह से यहां पे देखना है कि एक्टिव जो है लर्नर सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। तो किसी काम को जब हम खुद करते हैं उसमें इफेक्टिवनेस ज्यादा होता है, हमें अपने आप पे भरोसा ज्यादा होता है। हम जिस काम को खुद से करते हैं उसमें ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है, करेक्टनेस ज्यादा होती है। और किसी काम को और के द्वारा कराए जाने पर हम किसी और के द्वारा डिपेंडेंट होते हैं। सो इन दिस सिनेरियो, इफ द टीचिंग accepting by, grasping by the student, they have to think themselves, that will be most effective. So in case of active, a student should have to think, a student have to think, have to discuss, have to debate, have to understand about, think what the teacher give them, what the teacher taught them. That will be more efficient, that will be more permanent for them, and that will be easy approach. They can understand easily. In case of passive, that is teacher centered, required to observe or consider from the teacher what they deliver to the student. So आप देखोगे किसी काम को करने के लिए स्टूडेंट्स हम पढ़ाते हैं, हम टीचर से दिन रात हम जब क्लासरूम में जाते हैं पढ़ाते हैं उनको, तो हमारे अंदर स्टूडेंट्स को पहचानने की कैपेबिलिटी है कि किस स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट जिस चीज को खुद से करना सीखे, जिस चीज को खुद से ग्रास्प करने की कोशिश करे, वो चीज उन्हें जल्दी समझ में आती है और उसकी परमानेंसी होती है। तो इन दिस केस 10% व्हाट दे रीड, 20% व्हाट दे हियर, and 30% what they see. In case of passive learning, they see this through demonstrations, apply or practices by their teachers. Teachers define, describe, list and explain all the things on the blackboard, on the smart class, whatever the material, whatever the TLM used by them in the classroom. In case of active learning, 70% of what they see and write. So 90% what they do. So in case of active learner, they have to analyze, they have to define, they have to create and evaluate about themselves. This is the active learner. As field or hands-on experience are not possible in all the cases. बिल्कुल ये सही बातें हैं। हम थ्योरेटिकली किसी बात को जितना करते हैं, जितना कहते हैं, जब प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है, निश्चित रूप से आती है। सो फील्ड्स ऑन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आर नॉट पॉसिबल इन ऑल केसेस. अ टीचर शुड ट्राई एंड मेकिंग द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन मोस्ट डायरेक्ट, यूजिंग एज मच एज पॉसिबल by the appropriate TLM. The kind of TLM used affects the learning. For example, same content can be taught using different TLM and retention will vary according to the TLM used. निश्चित रूप से यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेम कंटेंट को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जा सकता है और जिन TLM का यूज कर रहे हैं उन TLM को का इफेक्ट करेगा। अब इसको हम इस तरह से सोचते हैं कि थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं TLM की, हम ब्लैक बोर्ड पे सीधे लिखते थे, हमारे पास स्मार्ट क्लास की सुविधा नहीं थी, या अगर थोड़ी देर के लिए सोच ले कि नहीं थी, तो क्या होता? हम ब्लैक बोर्ड पे बच्चे को उसी चीज को, उसी स्ट्रक्चर्स को, अगर सुनामी की बात करते हैं हम उसे ब्लैक बोर्ड पे या पिक्चर के माध्यम से, बुक के माध्यम से उसको बताते हैं, लेकिन उसी सुनामी को अगर स्मार्ट क्लास के माध्यम से अगर हम उस वीडियो को प्ले करते हैं, उसको दिखाते हैं, तो बच्चों के द्वारा उसकी समझ उतनी अच्छी होती है। हम किसी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को, किसी साइंस के प्रैक्टिकल को हम अगर लाइव दिखाते हैं कि लेबोरेटरी में अगर हम इस तरह से किसी रिएक्शंस को कराने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से इसका होता है, ये रिजल्ट आती है, तो उस समय क्या होगा? अब मैंने सिंपली कह दिया कि व्हाट हैपेंस कि व्हेन दिस इज ट्रीटेड विद दिस हैपेंस, तो बच्चे के समझने में वहां अंतर आती है। लेकिन इसी चीज को अगर करके द्वारा हम किसी ऑडियो विजुअल माध्यम से दिखाते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। नॉर्मल क्लासरूम की बात आती है। नॉर्मल क्लासरूम में जब हम सभी इंटर करते हैं तो बच्चे इस तरह से बैठे होते हैं,
जैसे हमारे यहाँ हम क्लासरूम में जाते हैं तो बच्चों का जो बैठने का जो तरीका है, जब टीचर इंटर करते हैं तो सबका अलग अलग होता है, जो कि आपने इस स्लाइड के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वी द टीचर्स यूजिंग द TLM, सो TLM को यूज करते हुए हम बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम टीचिंग को इफेक्टिव करने की कोशिश करते हैं। नाउ द पर्पस ऑफ यूजिंग TLMs, हम काम तो कर रहे हैं, TLM का यूज तो कर रहे हैं, बट उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसको देखते हैं। आई हैव मेंशन सम पॉइंट्स अबाउट द पर्पस ऑफ TLM, just try to explore them. First is motivate learners. We the teachers are the great motivators to the students. We are a role model in front of our students. So capturing attention is the first step to any learning, and TLMs helps in capturing the attention of learners in classroom. If we enter in the classroom, जैसा कि हम कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, हमारा ड्रेस कोड क्या है, हम क्या बोलेंगे, हमारे अंदर बोलने की अभिव्यक्ति कैसी है, हमारी नॉलेज क्या है, हम क्या जवाब देंगे वो बाद में दिखता है, बट हमारा अपीयरेंस, हमारा इंट्रेंस क्या है, दैट इज आवर फर्स्ट अटेंशन, दैट विल अट्रैक्ट the interviewer. So capturing attention to the students is the first whenever we enter into the classroom. Once motivated, look at TLMs. The children are curious to learn new things. TLM provide a variety of stimuli which helps in making classroom teaching most effective. Help in longer retention of information. More of the number sensory channels involved in interacting with the TLM, the longer will be the retention of information. Therefore the learning will be effective and will last long. हम लोग इसलिए नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग इसलिए नहीं TLM का यूज करें कि आज हमने पढ़ाया, एग्जाम पास किया, दैट्स एनफ। उसकी परमानेंसी होनी चाहिए। फैसिलिटेट होलिस्टिक लर्निंग, कह रहा है कि वी हैव रीड अबाउट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव। आज हम सभी लोग ट्रेनिंग करते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी नाम का जो टॉपिक है, जिस नाम से हमने CEO की 3 और डिफरेंट जो माध्यम है उसके थ्रू हम सबों ने ट्रेनिंग किया है। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव थ्रू क्लासरूम टीचिंग ऑन ऑल डोमेन्स, दैट इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमेट्रिक। सो देयरफॉर टू अचीव varied objectives, varied learning experiencing need to be provided, which can be done through TLM. Help in organizing classroom. As a teacher, we need to organize learning experiences. What we have learned from our learning experiences since our profession, since we have entered in this profession, we should make them as realistic as much as possible. We can use verbal, visual or audio visual. What TLMs to present the accurate data sequentially organized or in a systematic manner. This will help the teacher to verbal or visual communication in the classroom among the students. Thus we may use the TLM to overcome shortcomings in verbal or visual communications. Facilitate change in attitude. TLMs also help in changing attitude of learners. Attitude की बात आती है, तो यहां पे क्या होता है, कह रहा है कि TLM also help in changing attitude of learners. लर्नर्स के एटीट्यूड में चेंजिंग करते हैं, और एटीट्यूड हमारे लाइफ को बिल्डअप करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। So towards learning in general and subject content in particular, pictures, models and other TLMs helps including all the positive attitudes for learner. So during our classroom, during our class, attitude must be positive. This is not only the students, for teachers also. We should use practical applications as much as possible. क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को क्या होता है कि एक बार चलो मैथमेटिक्स को पढ़ाते थोड़ा सा देर हो गया, हमने पीरियड के बाद मैथमेटिक्स साइंस जो एक साथ थोड़ा सा जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें हमें थोड़ा सा स्ट्रेस देने के, बच्चों को स्ट्रेस लेना पड़ रहा है, बच्चों को थोड़ी सी ज्यादा दिमाग की जरूरत पड़ रही है, तो क्लासरूम को थोड़ा सा फन बनाना भी, थोड़ा सा इंथुजियास्टिक, थोड़ा सा ऐसा जिसमें इंटरेस्टिंग हो, उस तरह भी बनाने की जरूरत है। हमेशा उनके ऊपर बर्डन थोपने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से हो कि उनको ये बोर्डरम फील हो। सो TLM हेल्प मेकिंग लर्निंग फन इन द क्लासरूम।
Students enjoy the novelty in handling new objects to learn new concepts through them. So classrooms must be sometime interesting so that they can enjoy. Concept formations. They should always try to understand the concept formation. Conceptual studies. We have summed up all these 8 points, and through this structure, through this diagram, all these things we have to follow during our classroom session. These all are the purpose of using TLMs. So whenever we use anything, we should must think about its purpose, its objectives. ऐसा नहीं कि बस सीधे हम पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों के ऊपर क्या ऑब्जेक्टिव्स होगी, क्या इसके व्यूज होंगे, क्या पर्पस होगा. इस तरह जिस तरह हम जिंदगी में कुछ करते हैं, किसी भी नए काम को करने से पहले उसके ऑब्जेक्टिव्स को जानना जरूरी है कि what are its characteristics, what are its drawbacks, what will be its positive impact and the negative impact. Before that we have to discuss. Again, these are the principle of selection. When principle of selection and effectiveness in use, these are the points: educational values, realization of objectives, pupil. These are the points which we have to thought. Now the types of टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की बात अब हम करते हैं. हमने पर्पस को देखा, नीड को देखा, अब टाइप्स को देखना है कि क्या टाइप है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का. TLMs is the short for teaching learning materials. So teaching learning materials can be audio or audio visual or visual. These are the 3 types. हम ऑडियो को बताने की जरूरत है. ऑडियो में क्या क्या हो सकता है हम सभी जानते हैं. ऑडियो विजुअल की बात है, मीन्स हम उसे देख सके, व्यू कर सके, और एज वेल एज वी कैन जस्ट लिसन टू देम, हियर टू देम. विजुअल के अंदर 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड. प्रोजेक्टेड के अंदर स्टील फोटोग्राफ हो सकते हैं और मूविंग पिक्चर्स हो सकता है, ऑडियो हो सकती है, नहीं हो सकती है, जेपीजी इमेज हो सकता है, GIF इमेज हो सकता है, PNG इमेज हो सकता है. इसको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं बच्चों को. नॉन प्रोजेक्टेड के अंदर 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, जिसको कि हम ड्रॉ करके बच्चों को समझा सकते हैं. टीचिंग लर्निंग मटेरियल को हमने एक यहाँ पे सर्कल के थ्रू दिखाते हैं, जैसे इसको एक थोड़ा सा वेन डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई है. टीचिंग मटेरियल्स को और लर्निंग मटेरियल्स को. टीचिंग और लर्निंग मटेरियल्स में कुछ पॉइंट्स, कुछ एस्पेक्ट्स अलग है और लर्निंग में कुछ अलग है, बट दोनों का कॉमन कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं हमारे पास, दोनों का जो इंटरसेक्शंस है वो दिया हुआ है. लाइक टीचिंग के केस में हमारे पास पिक्चर्स, पोस्टर्स, चार्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, फिल्म, वीडियोज, पावर पॉइंट्स एक्सेट्रा हो सकते हैं. लर्निंग के केस में वर्कशीट से हम सीख सकते हैं, एक्टिविटीज सीट हो सकती है, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स हो सकते हैं, रेफरेंस साइट्स हो सकते हैं, सेल्फ स्टडीज हो सकते हैं, क्लासरूम डिस्प्ले हो सकती है, गेम्स हो सकते हैं. बट दोनों को अगर कंबाइन करके दोनों में से हम अगर कॉमन लेने की बात करें तो हमारे पास टेक्स्ट बुक्स हो सकता है, वर्क बुक्स हो सकता है, लैब्स है, लाइब्रेरी है, सीडीज है, कम्युनिटी रिसोर्सेज है. मीन्स बच्चों को हम कहीं फील्ड ट्रिप पे ले जा सकते हैं, किसी ऐसे कॉमन प्लेस पे ले जा सकते हैं जहां वो उसके सराउंडिंग्स, इन्वायरमेंट से कुछ स्टडी कर सके. So types of teaching learning materials can widely accepted by the popular way of categorizing TLMs is based on the senses they stimulate in learners. Audio TLMs. TLMs primarily stimulate the hearing sense of learners. It includes human voice, telephonic conversation, audio disc, tape, etc. Using all these devices, these can be used as our audio TLMs, audio teaching learning materials. विजुअल एड्स के केस में हमारे पास ब्लैक बोर्ड्स हो सकते हैं, मॉडल्स हो सकता है, पोस्टर्स, फिल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स. दीज आर यूज्ड एज विजुअल एड्स. These can be used as visual aids. Just a moment.
प्रोजेक्टेड, जैसा कि हमने कहा प्रोजेक्टेड के केस में कि कुछ जो हमारे पास हो सकते हैं वो प्रोजेक्टर्स हो सकता है, कुछ को हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। एक जो टीएलएम के केस में एक अभी आप हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाई जाती है। दिस इज आल्सो द सोर्स ऑफ आवर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। एक आती है, उसी में प्रोजेक्टर्स के थ्रू डिस्प्ले करते हैं, हमारे पास उसमें ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात आती है। दिस कैन आल्सो बी यूज्ड एज a better source of TLM, overhead projector. In short, we can say it OHP. So this can be displayed as a visual material through projection on the screen. It's a very simple, very easy to operate. Teachers can easily carry, easily portable from one classroom to another classroom. And in this case, अभी प्रोजेक्टर्स की जरूरत आती है। हमारे पास क्या होती है कि हमें उसको कर्टन गिराने की जरूरत पड़ती है, या लाइट ऑफ करनी पड़ती है, या जो भी गेट विंडोज जो भी बंद करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे ओवरहेड प्रोजेक्टर के केस में इसका बेनिफिट है कि उनको डार्क करने की जरूरत नहीं है, इजिली अप्रोच है, इजिली कैरी है। हम इसके थ्रू अपने कंटेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं। टीएलएम्स के रूप में आज हम लोग प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं। हम इसमें भी किसी न किसी, बिकॉज यूजिंग ट्रेनिंग, थ्रू ट्रेनिंग वी आर ऑल्सो लर्निंग समथिंग, एंड वी आर यूजिंग पावर पॉइंट स्लाइड्स। सो दिस कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज a teaching learning material, PowerPoint slide. But some points during PowerPoint presentations, during using the PowerPoint, we should must kept in our mind so that our presentations can be effective. हमारा presentations हमारा जितना इफेक्टिव होगा, ऑडियंस हमारे आपके केस में, बिकॉज वी आर टीचर्स, सो आवर ऑडियंस आर आवर स्टूडेंट्स. So whenever we have to taught them, we sometimes use some contents to inform a PowerPoint slide. But we should must keep some points during the presentations, during the creating of PowerPoint, during the preparations of our content material using PowerPoint slide. We should must kept the font size should same. If we make any changes, if we change any background, its templates, any color combinations, so we should imply the entire presentations. Font size should be the same, font type should be the same, so that our presentations should be unique. हमारा प्रेजेंटेशन जितना यूनिक होगा, स्टूडेंट उतना ही इंटरेस्टेड होंगे, उतना ही उसको डिजर्व करेंगे, उतना ही अच्छी तरह से उसको सीख सकेंगे. ऑडियो मटेरियल के केस में हम कहते हैं, ऑडियो में होता क्या है, आप बोलते हो, आपकी वॉइस, आपकी साउंड जनरेट होती है, आपकी साउंड जाती है. सो यू आर द सेंडर, you just speak something, your sound just deliver, sound goes up, sound move from yourself. You are the source and the students your destination, and whatever you just spoke, that is your sound, and students are the receiver. So this is your audio materials. So your voice, your speech, your delivery is also FTL. So it depends upon us, it depends upon us how we are using these TLMs, how we are using. The TLMs are all around us. We have to choose, we have to think which object, which entity we can use as a TLM. इंग्रेडिएंट सब कुछ होता है. चाय बनाने हम सबको आती है, अगर नहीं आती है तो जरूर आती होगी. चाय बनाने के लिए इंग्रेडिएंट से कोई अच्छा बनाता है, कोई थोड़ा सा टेस्टी नहीं बना पाता है. इट डिपेंड्स अपॉन आवर स्किल, इट डिपेंड्स अपॉन आवर थॉट दैट हाउ वी कैन मेक ए कप ऑफ टी और कॉफी. सो एट लास्ट द फ्यू स्लाइड्स, ओनली वेट फॉर फ्यू मिनट्स. I would like to request all of you, please wait for few minutes. So we have triple PF, that is PPPF. Teaching learning materials are designed, and the role of TLMs in the classroom is to make learning real, practical and fun for the children, not for the boredom, not for the burden of children. So teachers use TLMs to illustrate or reinforce a skill, fact or idea. So triple P, in first P, that is prepare yourself.
My dear teachers, my dear comrades, respectable learners, you should know your lesson objectives and what you expect from the class after the session and why you have selected such particular instruction material. So for this you have to prepare yourself before entering into the class. Prepare your students, set reasonably and high class expectations and learning goals. Motivate them and keep them interested and engaged. Next, present the material under the best possible conditions, using media and materials, especially if they are mechanical in nature, often requires rehearsal and a carefully planned performance. So, present the material in a systematic and very planned manner. Follow up. This is the last point of this PPF. You use the instructional material for the attainment of lesson objective. हमने क्या पढ़ाया, क्या बताया उनको पूरे पीरियड के दरमियान, इस बात को जानने की जरूरत नहीं है. हमें इस बात को जानना है कि हमने क्या दिया उनको. We should must follow up after our class what they have observed, what they will do, what we are doing. So, respected teachers, ये presentation, ये material TLM सिर्फ ये 30-20 स्लाइड्स का नहीं है. इसमें जब तक बोला जाए बोला जा सकता है और इसके अंदर बताया जा सकता है. But due to the limitations of times and as per the instructions of principal ma'am, we have to sum up our presentations. We have to conclude our training. So this is all about today's training. Now at last, thanks to all of you for giving the valuable time, valuable moments of your life to attend this training, to learn something from this training, and I also like to learn from you all side. So at last, thanks to respected principal ma'am for giving me this opportunity to attend this training, to conduct this training, to deliver this speech today. Our vice principal sir, both the block in charges, STNC head Dr. Rangat Misra sir, and a special thanks to Dr. Manish Kumar sir, who helped me to prepare these presentations, content editing and writing as much as possible. And a special thanks to all my IT colleagues, that is Amit Kishore sir, Arvind sir, Fasi Amar sir, and thanks to all of you. Again, thanks and goodbye. Okay. Again, at last, I would like to request all of you, if you all have any questions, any suggestions, you are free to write in chat box. Please write your suggestions, query, anything, whatever in the chat box. Okay, so let's sum up. Okay friends, so let's sum up, and now just I ended this session. Thanks again to all.